बिकॉज मुझे कुछ फीडबैक मिली है गुड मॉर्निंग सर, प्रदीप सर, प्रयास बारा ग्रुप है। Yeah, please tell us, sir. Hello. Actually, sir, yesterday we faced lot of problem due to the sound problem. More than 30 minutes, your side sound was disabled. So we missed the topic. Our students say that topic you can repeat once again. So it won't be actually possible for me to go. Because EIGRP and OSPF is a very huge topic. Okay, sir. If possible, you can send us the packet of the GSM 3. We'll send all the needful things, sir. Or PPT files and the programs of the GNS 3. Absolutely. We can. Okay. Thank you. Any other college? Gaucher College. So I think किसी और को प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो गया। So okay, I'll try कि मैं थोड़ा स्लो जाऊँगा। But अगर हम स्लो जाएंगे तो it won't be possible for me to cover the EIGRP and OSPF today. Because EIGRP और OSPF को हम अच्छे से खत्म करेंगे, तो it will take like 30 days. 30 days and 4-hour session. बहुत बड़ा टॉपिक है। So EIGRP, कल हमने कौन से प्रोटोकॉल करी थी? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। कोई इसका मुझे AD बता सकता है क्या होता है RIP का? मैट्रिक बता सकता है? मैट्रिक ओके। अब हमें EIGRP की रिक्वायरमेंट क्यों रही? EIGRP, जैसे मैं आपको बताया कि in the RIP, 16th router was treated as unreachable. You cannot reach after the 16th router. After the 15th router, it is unreachable. As you know, आज के डेट पे कितना बड़ा नेटवर्क हो चुका है हमारा। So in that case, उस चीज को ओवरकम करने के लिए एक प्रोटोकॉल सिस्को ने डिजाइन करी। This was actually a Cisco proprietary protocol when we used to study. जब कभी हम पढ़ते थे, EIGRP was a Cisco proprietary, but right now Cisco ने इसे open standard कर दिया। Now what do I mean by Cisco proprietary protocol? Can anyone tell me क्या होता है proprietary? Only Cisco product can use this. Yes, absolutely. This protocol will work only on the Cisco router. But इसकी वजह से Cisco को काफी challenges face होते थे। अब Cisco की devices बहुत ज़्यादा costly हैं। Cisco का अगर आप मार्केट में शेयर देखेंगे, they have 89% of market share. बाकी रेस्ट सिर्फ 11% है। D-Link हो गया, Huawei हो गया, Alcatel-Lucent हो गया, ये जितनी भी अदर वेंडर्स हैं, उनका सिर्फ 11% का शेयर है और Cisco अकेली का 89% शेयर है। So प्रॉब्लम फेस क्या होती थी? अब जैसे मैं कल बात कर रहा था, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। लेट्स से कि मेरी ये खुद की ऑर्गेनाइजेशन है। आई एम अ रिच फेलो, आई एम यूजिंग दिस राउटर, दिस इज अ सिस्को डिवाइस। मैंने कोई और कंपनी के साथ अगर कम्युनिकेट करना है, लेट्स से दिस इज अनदर कंपनी एंड दिस इज यूजिंग D-Link प्रोडक्ट, जस्ट टू नेम, ओके। EIGRP will not work when I'm using a Cisco router and when I'm using a D-Link router. तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए अभी रिसेंटली Cisco ने इसे ओपन स्टैंडर्ड कर दिया। The most widely used routing protocol in the today's world is internal world is जो कंपनीज के अंदर आपकी प्रोटोकॉल चलती है, that is OSPF,
because that was an open standard. Open standard होती थी तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती थी. Every company can't purchase इसका प्रोडक्ट. इसलिए OSPF is the most widely used protocol. But आज के सिनेरियो में जैसे ही सिस्को ने इसे ओपन स्टैंडर्ड किया है, अब ये उस चीज को टेक ओवर कर लेते हैं. बिकॉज कल मैंने आपको एडी का और मेट्रिक के बारे में बताया था. So, जो हमारी EIGRP होती है उसका मेट्रिक सबसे लोएस्ट है, दैट इज 90. EIGRP का AD जो है दैट इज 90, और जो OSPF का आपका AD है दैट इज 110, 110. Alright, so now we move on to the features. EIGRP protocol was a Cisco proprietary, but now it is an open standard. It is often said as hybrid protocol. Hybrid क्यों? कल मैंने आपको स्टार्ट जब सेशन किया था, I told you about the link state routing protocol and the distance vector routing protocol. Cisco ने क्या किया? कुछ फीचर्स लिंक स्टेट के उठाए, कुछ फीचर्स डिस्टेंस वेक्टर के उठाए, and they combined it. They made a hybrid protocol, which is your EIGRP. But for me, it is most like a distance vector routing protocol only, because ये भी routing by rumor ही होता है इसको. मैंने आपको कल बताया था कि जो RIP है, it uses a metric of hop counts. पर जो EIGRP है, this uses a composite metric. Composite metric में क्या क्या include होता है? आपका bandwidth, delay, load, reliability, maximum transfer unit, MTU. इन 5 चीजों से मिलकर इसका metric बना है. But the metric which is of prime importance is the bandwidth and the delay. Though reliability, load and MTU is also used, but maximum preference is given to the bandwidth and the delay. And we denote bandwidth as yes, maximum transfer unit. And I have told you EIGRP का जो AD है that is 90 and external EIGRP का AD is 170. अब कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा ना, व्हाट इज एक्सटर्नल AD? किसी के मन में है? Yes, sir. सभी के मन में आएगा. Okay, let's say this is my router 1, this is my router 2. ये मेरी एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है. So kindly analyze the video display. वीडियो पे डबल क्लिक कर दीजिए. वीडियो मैक्सिमाइज कर देते हैं. वीडियो Is it clear, sir? Let's say ये मेरे कंपनी का एक इंटरनल नेटवर्क है. 1, 3. I have so many routers here. राउटर का सिंबल जो है उसको कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं राउटर को. और यहाँ पे मेरी एक अलग कंपनी है. यहाँ पर मैं EIGRP यूज कर रहा हूँ. यहाँ पे लेट्स से मैं RIP यूज कर रहा हूँ. एक ये मेरी इंटरनल कंपनी है, एक मेरी नई कंपनी को ओपन की है मैंने. अब मेरे को पता होना चाहिए कि इस कंपनी का इंटरनल नेटवर्क कैसा है और इसके पास कौन कौन से राउट्स है. तो जब ये वाले RIP अपने राउट्स को यहाँ पे ट्रांसफर करेगा EIGRP में, तो उसका एक्सटर्नल AD होगा that will be DEX 170. This is called as redistribution of the routes. I will be redistributing the routes from RIP domain to the EIGRP domain. अब थोड़ा क्लियर हुआ what does I mean by an external EIGRP? When I am using the redistribution, which is out of the scope of CCNA level, just to कल भी मैंने आपको वैसे CCNP level का RIP करवाया था.
So this is called as redistribution. उसमें हम अभी नहीं जाएंगे. Redistribution, summarization आगे के टॉपिक्स हैं. So I guess सबको external EIGRP तो क्लियर हो गया कि उसका AD कैसे आया और क्या होता है. Okay, EIG जैसे मैंने कल आपको बताया कि जो RIP है that uses periodic updates. RIP uses periodic updates. से क्या RIP क्या करता था? After every 30 seconds, it used to send its entire routing table. Agreed? Yes. And you all have seen that yesterday. कि after every 30 seconds, I was getting an update. But EIGRP ने सोचा या Cisco वालों ने सोचा, do I actually need to send the same routes after every 30 seconds? Don't you think it will increase the CPU utilization of a router? राउटर को बार बार अलग अलग पैकेट्स बनाने पड़ेंगे. एक पैकेट यहाँ, एक पैकेट वहां, एक पैकेट वहां. सभी को एक बार अपना राउटिंग टेबल सेंड करना पड़ेगा. अग्री? सो EIGRP ने क्या किया? EIGRP में इन्होंने सिस्को वालों ने नॉन पीरियोडिक, पार्शियल एंड बाउंडेड अपडेट्स का कंसेप्ट लेकर आए. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय अ नॉन पीरियोडिक, partial and a bounded update? Non-periodic means that updates are not sent at the regular intervals. Updates are sent only when there is a change in the topology or in the metric. Let's say I have some routes here. मेरा ये नेटवर्क डाउन जाएगा, तभी ये सारा राउटिंग टेबल इसको भेजेगा, अदरवाइज नहीं भेजेगा. वो भी सारा राउटिंग टेबल नहीं भेजेगा. Partial means that update will include the routing table. Update will include the routes which have changed. जो routes change होंगे या कोई network down जाएगा, उसी को send करेगा, instead of sending the complete routing table. Bounded किस मतलब, let's say अगर मेरे पास इस router पे कोई network down गया है, तो यही router को उसको updates मिलेंगी. These are bounded. जिसके जो affected router है, it will send a query packet. Query का फिर वो reply करेगा. तो पीरियोडिक नहीं होते इसमें, नॉन पीरियोडिक होती है, पार्शियल होती है और बाउंडेड होती है. अब EIGRP ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम नंबर. ऑटोनोमस सिस्टम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या है? Let's say this is my EIGRP topology. Here, autonomous system number ASN is, let's say, 10. इसका autonomous system number 10 है. Just to limit the scope of the network. कि ये नहीं है कि routers कहीं पे भी जाते रहें. और एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के अंदर यू कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 255 हॉप काउंट्स. यू कैन नॉट हैव मोर देन 255 राउटर्स. और ये मेरा दूसरी EIGRP का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है. लेट्स से दिस इज ASN 20. सो नाउ ASN 10 एंड ASN 220 cannot communicate with each other. और रिमोट सेंटर से मैं जूम कर देता हूं. Autonomous system number 10, and this is my EIGRP autonomous system number 20. जो EIGRP ASN 10 or 20, they cannot communicate with each other, and I can have maximum of 255 routers here. When you think 255 networks, do I need to have a 255 routers अपने network के अंदर? No sir. Hello. Yes sir. Okay, so we can have maximum of 255 hop counts अपने EIGRP autonomous system number के अंदर, ASN के अंदर. Vivekanand College, do you have any query? Hello. Yes sir. Hello. हाँ जी सर. क्वेरी वो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट की तरह आप जैसे बोर्ड पे पढ़ाने के लिए जाए तो बोर्ड को थोड़ा मैक्सिमाइज कर दिया जाए, व्हाइट बोर्ड.
All right. Next slide. ऑटोनोमस सिस्टम नंबर किसी को कुछ कंफ्यूजन की क्यों यूज हुआ, जस्ट टू लिमिट द स्कोप, कि नहीं तो हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है कि स्कोप के बाहर जा सकता है, तो उसको लिमिट करने के लिए हमने एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर का उन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर आए सिस्को वाले। दिस कैन बी टिल मैक्सिमम टिल 65,555, इतने आप ASN उसमें अपने नेटवर्क के अंदर बना सकते हो। Now again, I told you that ASN 10 and ASN 20 cannot communicate with each other. Again, to make them communicate, we'll use redistribution. Redistribute होंगे routes. Again, routes का फिर जो AD होगा, that will be 170. Okay, EIGRP is a classless protocol. That is, each route entry in an update includes subnet mask. कल मैंने बड़े डिटेल में बताया था आपको, if you all remember. Now EIGRP uses RTP. कल मैंने आपको बताया था कि जो RIP है, that uses UDP port number 520, right? RIP uses UDP port number 520. Cisco ने क्या किया, अपनी ही एक reliable transfer protocol को develop किया, and they are using port number 88 for the EIGRP packets to communicate with each other in the EIGRP domain. किसी को डाउट? सिस्को ने क्या किया, RTP को डेवलप किया, रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये क्या करती है, जस्ट लाइक TCP की तरह, आप क्वेरी कर रहे हो, उसको एक्नॉलेज करेगी, उसका अपडेट सेंड करेगी। आई शो यू ईच एंड एवरी पैकेट टुडे। आई शो यू द क्वेरी पैकेट, आई शो यू अपडेट पैकेट, आई शो यू एंटायर राउटिंग टेबल टुडे with the help of Wireshark. Alright. अब मैं इसको और डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, नहीं तो फिर हमारा टॉपिक नहीं कंप्लीट हो पाएगा। EIGRP sends its messages at a multicast destination of 224.0.0.10. RIP version 2 किसके ऊपर करता था? किस पे करता था? .9. 224.0.0.9. और RIP version 1 किस एड्रेस पे करता था? ब्रॉडकास्ट तो करता था 255.255. All right. Now RIP also supports MD5 and clear text authentication. कल ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं आपको RIP में ऑथेंटिकेशन नहीं दिखा पाया था, but today we'll be applying authentication between two routers. Okay. Now EIGRP uses diffusing update algorithm to choose its best path to reach a particular destination. मैंने आपको कल क्या बताया था कि RIP किससे यूज करती है? Bellman-Ford algorithm, right? ये क्या करती है? डुअल को यूज करता है, diffusing update algorithm. Okay, EIGRP's hello packet and 8G sensing. अब मैंने आपको बताया, कल मैंने आपको बताया RIP में सीधा आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स RIP enabled इंटरफेस पे आपका periodic अपडेट्स जाती हैं, बट EIGRP में ऐसा नहीं है. What does EIGRP do is EIGRP make neighbors. EIGRP forms neighbors. For making the neighbor, EIGRP uses a hello packet. Just like I want to communicate with all of you, I will be sending you a hello packet after every 5 seconds. Let's say I want to communicate with Nipun, I want to communicate with Pavan, I'll be sending them a hello packet after every 5 seconds. This is just are you up? This is just a keep alive message. Are you alive? Are you alive? Are you alive? उसका मेरे को hello आता रहेगा, means everything is hunky dory. There's nothing to worry about. Your network is working properly. All right, but inside a hello packet, there are some parameters which need to be matched before I declare you as my neighbor.
Now, what are those parameters? First of all, it is autonomous system number. Inside a hello packet, let's say this fellow is sending a hello packet to him, and he is sending a hello packet to him. Let's say this is a hello. This is also a hello packet. Now, inside this hello packet, there are some parameters that need to be matched before router 1 and router 2 consider themselves as a neighbor. इसमें क्या रहता है? First of all, they should be in the same autonomous system number. अगर autonomous system number different है, I cannot communicate with you. All right. Next is the hold down timer, which is 15 seconds. Hold down timer. 15 seconds. Next are your K values. I told you EIGRP uses a composite metric. जो bandwidth है, that is K1. Delay is K3. Reliability is I guess K2. Load is your K4, and MTU is your K5. By default, K1 and K3 is equal to 1, and K2, K4 and K5 is equal to 0. The default values, K value जो होती है, और hello packet के अंदर का एक और पैरामीटर होता है, which is your authentication. If applied, अगर मैंने राउटर्स के बीच में ऑथेंटिकेशन लगा रखी है, I should have the same authentication. आपको पता होगा, you must have heard about the MD5 and clear text authentication, message digest 5 and clear text. Okay? तो ये आपके इन दोनों को सपोर्ट करता है, MD5 and clear text या plain text जिसे हम बोलते हैं. Okay. चलिए MTU 0 कैसे हो सकता है? This is 0. Default is 0. Actually, वो होता है आपका 1500 तक जाता है. Explain that thing later on. Okay. Now, if these parameters are matched, then R1 and R2 will declare each other as neighbor. Yes, I know you. हम दोनों के parameters match करते हैं. We both are neighbors now. Okay. जैसे ही neighbor form होंगे, इनके बीच में एक virtual link create हो जाएगा, and this virtual link will be called as an adjacency. Adjacency जब इनके बीच में create होगी, तभी ये दोनों आपस में अपना routing table को exchange करेंगे. Otherwise, they will not be able to exchange the routing table. You can say that मेरा router का जो interface है, that is physically up. कल आपने देखा था ना जब मैंने show interface किया था. Careful. When I did show IP interface brief, आपको मैंने दिखाया था कि पोर्ट आपका एडमिनिस्ट्रेटिवली अप होता है या डाउन होता है. अगर वो अप भी है और एडजेसेंसी क्रिएटेड नहीं है when we are using EIGRP, उस केस में that is of no meaning because my routing table will not be exchanged. कल जब मैं ISP को मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया था, मैं तो पहली बार उसको IP नहीं दिया था, उसके बाद उसको फिर अप करना जरूरी होता है. हम नो शट कमांड यूज करते हैं. अगर नो शट भी हमने किया हुआ, नो शट डाउन किया हुआ, स्टिल हमने उसके बीच में एडजेसेंसी क्रिएटेड नहीं है, मतलब हमारा राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं होगा. Okay. Now EIGRP maintains 3 tables. First is your neighbor table. Okay. Parameters are matched. We are neighbors. R2 is my neighbor. If I consider R2 as my neighbor, R2 will be entered into the neighbor table of R1. The next table is the topology table. Let's say R1 has so many routers behind it. Can you all see? R1 has so many routers here, and it has so many networks behind it. जब ये सारे अपडेट उसको सेंड करेगा फर्स्ट टाइम, तब ये क्या करेगा, इसको अपने टोपोलॉजी टेबल में रखेगा. कहाँ रखेगा? टोपोलॉजी टेबल में.
फिर उस पर्टिकुलर टोपोलॉजी टेबल में ये इट विल रन द डुअल डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द बेस्ट पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन। किसी को अभी तक कोई डाउट? बिकॉज दिस इज अ वेरी ह्यूज कॉन्सेप्ट, बट मैं आपको बहुत छोटा और लेमन में समझा रहा हूं। I have entire routing table with me. मैंने उसे क्या किया, instead of putting them into my routing table, I have put them into the topology table. Once I have the complete routes, I will run diffusing update algorithm to calculate the best path to reach a particular destination. अब जो उसमें से best path आएगा, उसको मैं कहाँ रखूंगा? अपने routing table में। मेरा routing table छोटा हो गया। And just to tell you, EIGRP has the fastest convergence. Fastest convergence mean अगर एक नेटवर्क डाउन जाएगा तो दूसरा immediately up आ जाएगा। Now this all credit goes to dual. Next. Dual calculation. Neighbors are formed, routes are exchanged. EIGRP wants dual to calculate the best path. Dual will calculate two paths. One is your primary path, second is your secondary or the backup path. One is your primary path, which is called as successor, and backup path is the feasible successor. I told you that EIGRP has the fastest convergence. EIGRP has the fastest convergence. Why fastest convergence? Because dual आपको calculate क्या करके देगा? एक आपको primary path calculate करके देगा और एक आपको backup path calculate करके देगा। जैसे ही primary path in case down जाता है, let's say I have a router here and a router here, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। Let's say this is my primary path and this is my backup path. जैसे ही primary path मेरा down जाएगा तो मेरा backup path immediately up आ जाएगा। और जैसे ही प्राइमरी पाथ वापस अप आएगा, अगर लेट्स से कि लिंक मेरा फ्लैप हुआ था, मतलब ऑफ जाके ऑन आया था, उस टाइम पे क्या होगा? मेरा नेटवर्क आपस में ब्रेक नहीं होगा। आई विल स्टिल हैव द रीचेबिलिटी फ्रॉम हियर टू हियर थैंक्स टू दिस बैकअप पाथ। और ये बैकअप पाथ हमें कौन कैलकुलेट करके दे रहे हैं? ड्यूअल। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि बैकअप पाथ कैसे कैलकुलेट होता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा तो। Next slide. Okay, EIGRP terminology is very important. I guess very important. अगर ये आपको समझ आ गई 4-5 चीजें तो आपको समझ आ जाएगा EIGRP कैसे काम करता है. First of all is the successor. I told you the primary path will be called a successor. This is a successor. जो मेरा प्राइमरी लिंक है जो मेरे को अपने डेस्टिनेशन के पास लेके जा रहा है, दिस इज माय सक्सेसर. जो सेकंड बेस्ट पाथ है और द बैकअप पाथ जिसे मैं बोल रहा हूं, दैट विल बी माय feasible successor. Now there is another term, FD, feasible distance. It is the total distance to reach a particular destination. अब प्लीज थोड़ा ध्यान से लीजिएगा इस पे. Okay, so let's say I have this particular topology, a very symmetric topology. Now for router, for network X to reach network Y, you can see there are many paths. R1 can send this particular network using this path, using this path, using this path.
or either by using this path, by using this path. समझ आ रहा है आपको इसमें कि for X to reach this particular network ये कहीं से भी जा सकते हैं Y के पास, पर मुझे जब ये सारा नेटवर्क इसके पास R1 के पास होगा, R1 इस सारे राउट्स को कहां पुट करेगा, टोपोलॉजी टेबल में, और उस पे ये ड्यूअल को रन करेगा. R1 will calculate the best path so that X can reach Y. Now what do I mean by a feasible distance? Feasible distance is the total distance from X to reach Y. Let's say मेरे पास ये, अभी मैं पूरा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा आपको. Let's say this is 10 and this is 20 and this is directly right, this is 1. Okay, 10, 20, 1. Now what is the total distance or the feasible distance for X to reach Y? 31. Do you have any issues understanding this? For X to reach Y, this is 31. This is my total distance, or I call it as feasible distance. Agree? Now the next term which comes is ED. Don't mix it with the administrative distance. This is the advertised distance. कौन सा distance है ये? Advertised distance. Like we are moving from R1 to R5. This is the distance is 31. We can also move from R1 to R2. You can go from anywhere. So this is just to make you people understand. I told you ना, these are the paths. ये path भी follow कर सकता है, ये यहाँ से भी जा सकता है, ये यहाँ से भी जा सकता है. Any distance is feasible. Any distance is feasible distance. Total distance from one destination to reach that particular destination. From source to अब destination. वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है होता है, मैं आपको उसमें नहीं लेके जाऊंगा. मैं भी सारा सेशन उसी में चला जाएगा. Just to make you people understand कि AD FD के बिना आप आगे नहीं चल सकते. ठीक है? FD आपको क्लियर हो गया. टोटल डिस्टेंस. What do I mean by a advertised distance? Administrative distance से मिक्स नहीं करेंगे प्लीज. Let's say मुझे X को R4 के थ्रू होके जाना है. अब R4 क्या कहेगा? Okay, you want to reach this particular destination via me, but the total FD from R4 perspective is 21. Clear? Total distance for R4 to reach XY is 21. जब ये अपने FD को इसको बताएगा, R1 को बताएगा, that will be the advertised distance for R1. सब इतने मुरझाए हुए क्यों लग रहे हैं? समझ नहीं आ रहा है किसी को? आगे समझ? ओके, मुझे बताओ AD क्या होता है? सर आप ही बता दीजिए. What do I mean by AD? सर, advertised distance क्या होता है वो? Next total distance, or we can say path. Let's say I want to reach you through him. Okay. The distance आपके और इनके बीच का distance होगा, that will be the FD for him, but जो वो मेरे को अपना distance बताएंगे, that will be AD for me. So that I can reach you via him. मुझे आपके पास जाना है, but मैं कहां से जाऊंगा? इनके थ्रू होके जाऊंगा. एक टर्म और आती है which is called as your local distance. Now this is the local distance for R1 to reach R4. Local distance is 10. So slide there. Sir, so ये जो X to Y हमने कनेक्शन करता है, जो कम्युनिकेशन दिखा है 10 डिस्टेंस है टोटल X to Y. Total distance is 31. This distance FD from R4 perspective is 21. This 20 and this 1. This is 21. When this 21 will be advertised to him, this will be the advertised distance for R1.
So the 10 will be between This is the R1 local and R2. distance. R1 and R4. Yes. It will be between R1. This is the local distance for R1 to reach R4. But you have given this one from X2 Y. मतलब इसके बीच का बता रहा हूँ ना, अभी उसको नहीं जाना ना. Means a feasible distance. This will be the FD for R1 to reach R4. 10. Clear हो. Sir, नहीं ये R1 से R3 to X2 Y है, that is 31. R1 X से X से Y. Y. This is total is 31. 31. 10 here, 21 here, 1 here. Okay. This is the total distance or the feasible distance. जब ये R4 के पर्सपेक्टिव से अगर R4 को आपके Y के पास पहुंचना है तो कैसे पहुंचेगा? वो पहुंचेगा 21, उसके लिए feasible distance रहेगा. But जब ये अपना feasible distance R1 को बताएगा, that will be the advertised distance for R1. And for R1 to reach R4, total distance, local distance is 10. And for R1 to reach R3, local distance is 20. Okay. जब ये सब चीजें कैलकुलेट होंगी तो ये अपना इसी तरह सेम चीजें यहाँ रहेंगी. इनकी भी कुछ आपस में वैल्यू रह सकती है. लेट्स से 5 इसकी है, 5 इसकी है, 1 यहाँ पे है. लेट्स से 30 यहाँ पर है और 31 यहाँ पर है. और लेट्स से यहाँ पे भी 30 है. अब इसी तरह ये भी कैलकुलेट करेगा. ये सारी चीजें R1 को R4 तो दे रहा है, बट यही सारी चीजें R1 को R2 भी देगा और R5 भी देगा. तो इनके बीच का FD कितना हुआ? 11. यहाँ पे कितना हुआ? 61. ओके, दिस इज वेरी मच हायर. इसको तो मैं कंसीडर ही नहीं करता. आई नीड द बेस्ट पार्ट, जिसका मैट्रिक लोअर होना चाहिए. आई सेड लोअर इज बेटर. Do you all agree with this? Lower is always better. क्यों better होता है समझ आ गया? Okay. अब मैंने कहा there is a next term called as feasibility condition. So it says for a path to become the feasible successor, its AD should be less than my FD. Its AD should be less than my FD. Confusing? Very much confusing. अगर मुझे बैकअप पाथ बनना है तो मेरा जो दूसरे राउटर का AD है, एडवर्टाइज डिस्टेंस है, that should be shorter than my FD, my total distance. टोटल डिस्टेंस तो हमेशा हायर होगा. फिर से जो आपका एडवर्टाइज डिस्टेंस है वो हमेशा कम होगा, बिकॉज ही इज ऑन द हाफ वे और मुझे वो पूरा वहां तक पहुंचना. इसमें तो किसी को डाउट नहीं. जैसे मुझे वहां पे सर के पास पहुंचना है, सर के थ्रू होकर, दिस इज द हाफ डिस्टेंस एंड दैट इज अनदर हाफ. तो फ्रॉम मी टू रीच हिम दिस इज टोटल डिस्टेंस. वो तो हमेशा ज्यादा होगा. लेट्स से मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, बीच में मैं हॉल्ट लेता हूँ करनाल में. करनाल से तो दिल्ली आधा ही है ना, और चंडीगढ़ से दिल्ली आता है, वो करनाल आता है. सो एडी और एफडी क्लियर हुआ आपको. अब हम कहते हैं कि अनदर राउट आएगा. ड्यूल क्या करती है? बैकअप पाथ भी कैलकुलेट करती है. लेट्स से कोई अनदर रास्ता दिल्ली की तरफ जा रहा है, चंडीगढ़ टू दिल्ली जा रहा है. वो कहाँ से होके जा रहा है? वो लेट्स से कोई रास्ता जाता है, बताइए जरा मुझे. अंबाला तो आएगा. हाँ, ये वो लंबा रास्ता लेते हैं, कैथल झील वाला है. आई थिंक दे आर फ्रॉम हरियाणा साइड है. लेट्स से कि एक रास्ता जा रहा है दिल्ली को, वो जा रहा है कैथल के थ्रू होके या जीन के थ्रू होके, जा सकते हैं. तो जीन के थ्रू जो रास्ता होके जा रहा है, दैट विल बी माय बैकअप पाथ. ठीक है, मुझे दिल्ली जाना है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो मेरा कौन सा बना? करनाल वाला रास्ता, जो सीधा रास्ता है. बट अगर मेरे को, अगर लेट्स से वहां कोई ट्रैफिक जैम है या कुछ भी वहां पे कोई प्रॉब्लम है, वो रास्ता बंद है, तो मैं दूसरे पाथ से भी दिल्ली रीच कर सकता. तो दूसरा पाथ होगा, दैट विल बी माय बैकअप पाथ. बैकअप पाथ बनने के लिए कंडीशन ये है कि उसका जो एडवर्टाइज डिस्टेंस है, मतलब उसका दिल्ली तक का जो डिस्टेंस है, दैट शुड बी लेस देन माय टोटल डिस्टेंस. जीन से दिल्ली इज लाइक
100 किलोमीटर्स इतना ही आई गेस 160 किलोमीटर। और जो मेरा चंडीगढ़ से दिल्ली का रास्ता है, जो मेरा प्राइम डिस्टेंस है, डेट इज 250 किलोमीटर। हाँ, तो इस केस में कंडीशन ट्रू होती है, फुलफिल होती है कि अगर मुझे उसे अपना बैकअप पाथ उसे बनाना है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि उसका जीन से दिल्ली का डिस्टेंस जो वो मुझे एडवर्टाइज करेगा, डेट इज 100, विच इज लोअर देन माई 250, विच इज माई एक्चुअल FD फ्रॉम चंडीगढ़ टू रीच दिल्ली वाया करनाल। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये रस्तों में खो गए होंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, मेरे को भी माइंड में नहीं था, अभी आया। ठीक है, मैं भी खुद कंफ्यूज था, मैं आपको कैसे समझाऊंगा ये विदाउट द प्रॉपर एग्जांपल। रिप में मैट्रिक्स कैलकुलेटिंग रिप में मैट्रिक हॉप, इसमें इसे इसका कंपोजिट मैट्रिक हो तो यू केम लेट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Now, how do I configure my EIGRP? Under the global configuration mode, I will be writing router EIGRP autonomous system number, ASN. Then I have to say no auto summary. I have to define a network there with, and here I introduce a new term called as wildcard mask. अगर आप वाइल्ड कार्ड मास्क दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, still it will work. But I'll show you what do I mean by a wildcard mask. It is inverse of your subnet mask. Let's say I have 192.168.10.1, 255.255.255.0. What is this? This is subnet mask. This is not class C. I'm not talking about classes. I'm just talking about a subnet mask. What is a subnet mask? Revision your lesson. Sir, subnet mask are used to identify that in IP address which part is network ID and which part is. Absolutely right. Now I introduce a concept or a new terminology, which is your wildcard mask. This is inverse of the subnet mask. Let's say मुझे कल नेटवर्क को डिफाइन करना है यहाँ पर EIGRP के अंदर, I'll say 192.168.10.0 देते हैं, 10.0 0.0.0.255. This is inverse of your wildcard mask. Now, कल मेरे मन को था कि आपने किसी ने पूछा मुकुल सर से या नहीं पूछा, ये 225 क्या करते हैं यहाँ पे? This is for the exact match. ओके, अगर मुझे यहाँ पे ये नेटवर्क मिल रहा है, यहाँ पे तक तो जाइए, इसका आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मेरा जो मैच होना चाहिए नेटवर्क का, कल आपने देखा था मैंने क्या किया था, 10.1.0.0 था, पर मैंने उसे 10.0.0.0 किया था। मैच ओनली 10, रेस्ट आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। इसमें क्या करना है, आई वांट दिस इज द एग्जैक्ट मैच, ये पूरा मैच चाहिए मेरे को, मेरे तीनों ऑक्टेट मैच होने चाहिए, तभी वो आगे जाएगा। लेट्स से कि मेरे पास एक यहाँ पे नेटवर्क है 192.168.11.0, डू यू थिंक ये जाएगा? Because octet is changed. This is change. कल मैंने आपको एक बात और कही थी, कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट मैच, याद है किसी को? भूल चुकी है। 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.0.0 255.0.0.0। ओके, अब मुझे कोई बताए इसमें क्या डिफरेंस है। लेट्स से आई हैव अ नेटवर्क हियर, मैं कहाँ ड्रॉप करूं, यहाँ ड्रॉप। This is router 1,
This is another router here. Router 2 और यहाँ पे कुछ routes हैं. यहाँ पे 3 पाथ जाते हैं. एक पे मैंने डिफाइन किया 192.168.10.0, एक पे किया 192.168.0.0, एक पे मैंने किया 192.0.0.0. तो कौन से पाथ को राउटर 1 चूज करेगा R2 तक रीच करने के लिए? थर्ड वन मिनिमम मैचिंग होगी. रॉन्ग. थर्ड वन सर 192.0.0.0 इसको चूज करेगा. 192.0. किसको करेगा? सिर्फ 2 नमाजें आ रही हैं, बाकी सो रही हैं. उसको करेगा तो longest match करेगा. Concept, this is the concept of longest match. 192.168. किसको चूज करेगा वो? First one. This one will be given the preference. इस पाथ को प्रेफरेंस मिलेगी बिकॉज इसके साथ 3 ऑक्टेट मैच हो रहे हैं, इसके 2 ऑक्टेट मैच हो रहे हैं और इसका लास्ट ऑक्टेट मैच हो रहा है. तो दिस विल बिकम योर प्राइमरी पाथ, दिस विल बिकम योर बैकअप पाथ, दिस विल बिकम योर सक्सेसर एंड दिस विल बिकम योर feasible successor. Are we clear? ADFD. बहुत confusing है. So next slide. वाइल्ड कार्ड मास भी क्लियर हो गया कि नहीं हुआ क्लियर? अगर मेरे को इसका वाइल्ड कार्ड मास देना है तो आई गिव इट, राइट इट एज दिस. इसका वाइल्ड कार्ड मास विल बी, इसका वाइल्ड कार्ड मास मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस विल बी 0.0.250. और नेक्स्ट का क्या होगा? 0.3 times 255. Do you all agree with this? Yes sir. This is the wildcard mask. Means I am matching only my first octet here. 0 means match here. This I don't care. I don't care. Is it clear? Okay, now we move on to the configuration part. It's already 11. So these are the few commands which we will be using today. First, I think we should move to the topology. I have already. This is our task for today. Let's go to stop sharing. Our desktop sharing is enabled now. Yes, all the remote centers will be able to see it. Remote centers, please click on the window, fit to window. You must be getting a window there. और उस पे जाना मुझे प्रेजेंटेशन करके जाना. Stop desktop sharing. पूरा सब करना है. ऐसा नहीं से पहले चलेगा. Your desktop is big screen. Last. Okay. This is my today's topology, जो मुझे आज configure करना है. First of all, what it is saying is configure EIGRP with autonomous system number 10 between router 1, 2, 3 and 4. Check the neighbor table at each router. Check the topology table at R4. At R4, shut down the successor path towards R1. मैंने अपने successor को जो मेरा primary path है मैंने उसे बंद कर दिया. Will R4 will be able to reach host this
this particular host here. From R4 I want to reach here. Let's say this is my primary path. ये down चला जाता है, तो क्या मैं यहाँ से यहाँ पहुँच सकता हूँ? At R3, apply the MD5 authentication to the interface, taking him to R4. Okay, this is my interface, जहाँ पे मुझे authentication को apply करना है. तो मुझे देखना है कि उसका इफेक्ट क्या होगा. So let's start configuring EIGRP first. Yes, sir. Do you have any doubt? More centers? Sir, I would like to ask whether this PPT could be available for us. Actually, some Yes, sir. matter is the high. Sharing it all. That's why we are looking for such PPT. To all the centers, we will be sending all the PPTs right away. Within the file sharing, you can download it. Okay. Thank you, sir. After this session, we will send it across. Okay, yesterday I did all the things on the router. I think अब 2 sessions हो चुके हैं. You must be aware कि interface mode में कैसे करते हैं, global configuration mode में कैसे जाते हैं. So आज मैं थोड़ा fast जाऊंगा. First of all, I'm doing the configuration of router number 1. These are my interfaces. Anyone having problem in understanding this topology? What's the name of this interface? No. What the IP address I'll be sending to this interface? 10.1. Come on. 10.1. Why 12.1? This is the interface. It will be 10.1.14.1. And what will be the IP address on this particular interface? It will be address. 34.1. Why 1? This is out of 4. So it will be 34.4 here. सब भूल गए लगता है कल का. This is .4. This is also .4. This is .3 and this will be .3. 10.1.13.3, 10.1.13.1, 10.1.14.1, 10.1.12.1. On every interface, जो भी router है, let's say this is my router number 1, तो इसका सभी interface को मैंने .1 दिए. इसको .4 and .3. Now I have 3 interfaces here. First of all, what will be the IP address here? Now what will be the next command? मुझे बोला गया slow चलने के लिए. No shut. रुक जाओ time INTF 0/1. What will be the IP address here? 10.1.14. No shut.
No, this is 0/1. This is 13. So this will be my initial configuration for router number 1. Okay, copy this, paste it here. That's my problem. INT loop back 1. Right. Now what's the command to see the interfaces of the router? Only in brief. So Show IP interface. These are the 3 interfaces which I have configured, and with one loopback. Can you all see? Okay, now we move on to router number. Let's go to router number 3 first. Okay, F0/0 is my 10.1.13.3. F0/1 is 10.1.34.3. 10.1.34.3. Agreed? yes, sir. Now I will go to router number 3 and paste it here. Why is it showing the okay? Show IP interface. 2 interfaces and 1 loopback. Yes. Okay, now we move on to route number 2. INT loopback 2. This will be 2.2.2.2. F0/0. This is 12.12.2. I only have this one interface here at router number 2. We go here and paste it. Show IP interface 3. I have another interface here which is actually down. नहीं, यहाँ पे कोई और इंटरफेस होगा जो इस वक्त डाउन है. You see? मैंने फास्ट इथरनेट 0/0 पे कॉन्फ़िगरेशन करी है. This is fast Ethernet 0/0. I must be having some another interface here जो इस वक्त मैंने यूज में नहीं लाया. Now I move on to router number 4. Move back 4.4.4.4. F0/0 is 10.1.14.4. Interface F. Okay, what will be the IP address? 10.1.34.4.55.255.255.0. Okay. इसमें किसी को डाउट? वो टोपोलॉजी में शो नहीं होगा इंटरफेस. कौन सा इंटरफेस? जो R3 पे डाउन है. R3 पे कौन सा इंटरफेस? वो मैंने यूज नहीं किया ना इसलिए. Okay, just to check. Show IP interface. Brief. My all interfaces are up now. Now just to verify that I am not using any routing protocol here, the command is show IP protocols blank.
No protocol is running. Now what I have to do is I have to configure EIGRP with autonomous system number 10, ASN 10. Okay. What I'll say, configuration terminal, router, EIG. Okay, let's do it here only on the router. Configuration terminal, router. Put a question mark. These all are the protocols which you can use. I'll be using EIGRP. Put a question mark. It is asking for an ASN, and I told you it can maximum ASN I can use is 65,535. Okay. तो task में क्या है? We have to use autonomous system number 10. Next is node of summary. Network is 10 dot. Oh, it's again showing some problem here. Anyhow, कोई problem नहीं, होता रहता है. Network is 10.1.0.0. Now I have to put a wildcard mask. क्या put करूँगा मैं यहाँ पे? 0.0.255.255. All agree on this? I have to add another network. I also have loopback here, right? 1.0.0.0, 0.255.255.255. Done. My EIGRP is configured on router number 1. ओके मैंने क्या किया है, मैंने इस 10.1 नेटवर्क को भी एडवर्टाइज किया है, इसको भी एडवर्टाइज किया है और इसको भी एडवर्टाइज किया है. मैंने क्या कहा, 10.1 को सिर्फ आपको एडवर्टाइज करना है. यू डोंट केयर अबाउट दिस 12, दिस 14 एंड दिस 13. आई डोंट केयर अबाउट देम. आई ओनली केयर अबाउट 10.1. तो अभी मैंने मैप जो यहाँ पे किया, this and this should be matched. This I don't care. Okay. Now I move on to router number 2. I say debug IP packet debug IP EIGRP. Router EIGRP autonomous system number should be 10. network क्या आएगा, 10.1. wildcard mask में नहीं देता यहाँ पे. Look at this. Instantly आपकी EIGRP up आ गई. This is what is happening behind the scenes. Do you all means undebug all. Okay. मेरे को नेटवर्क देना है 2.0.0.0. ओके, मैंने उसको भी एडवर्टाइज कर दिया. लेट्स लुक एट हियर. यहाँ पे हुआ क्या, सोर्स इज 10.1.12.2. R2 है. किसको किसने किया है, मल्टीकास्ट कहाँ पे किया है इसमें, राउटिंग टेबल 224.0.0. अग्री. मैंने आपको बताया था कि किस पे मल्टीकास्ट करता है. ओके, डेस्टिनेशन इज दिस. ये अपना राउटिंग टेबल को चेंज कर रहा है. यहाँ पे अपडेट मैसेज जा रहा है, इसने कहीं पे क्वेरी भी किया होगा. और लेट मी शो यू समथिंग एल्स. I go out to this interface. I'll be using Wireshark. It is a network protocol analyzer. काफी लोग यूज करते हैं इसे. Start Wireshark. This will be sending hello packets after every 5 seconds. Look at here. Can you see the hello packets?
अभी और अपडेट नहीं सेंड करेगा क्योंकि ऑलरेडी अपनी टोपोलॉजी को कन्वर्ट कर चुका है। यहाँ पे से स्टॉप वायर। मैं आपको एक एक पैकेट दिखा रहा हूँ। दिस इज माय हेलो पैकेट। किसने भेजा है? राउटर नंबर 1 ने। 12.1 इज योर राउटर नंबर। डबल क्लिक हियर। These are the parameters. Autonomous system number should be 10. जो मैंने आपको बताया था इनसाइड द हेलो पैकेट कुछ पैरामीटर्स मैच होते हैं। This is the autonomous system number. These are the key values. Key 1 and key 3 is 1. Rest are 0. Hold down timer is 15 seconds. I have not applied the authentication yet. इसलिए यहाँ पे authentication नहीं दिखा रहा। अगर मैं authentication अप्लाई करूंगा तो authentication भी दिखाएगा। किसी को ये समझने में डाउट हो रहा है? Okay, look at this. This is my IPv4 header. सभी I guess teachers हैं तो students को IPv4 header तो बताते ही होंगे। This is your IPv4 header. Source is this, destination is this, version is 4. बहुत कुछ होता है। Flags, offset, frame, so many things. This is your layer 2. This is the MAC address. Can you all see? Yes. Is it visible? Okay, now I will close this. Now I will move on to router number 3. यहाँ पे वाइल्ड मार्क्स सिलेक्ट किया क्योंकि EIGRP के दो से वाइल्ड कार्ड मार्क यहाँ पे मैंने आपको कहा ना अब यहाँ पे अप्लाई करो या ना करो, it hardly make any sense. But on OSPF you have to mention वाइल्ड कार्ड मार्क्स. Configuration terminal. Okay. एक काम करते हैं, इस इंटरफेस पे पैकेट को कैप्चर करते हैं। अब इसे सिर्फ हेलोज R1 सेंड कर रहा है। हर 5 सेकंड बाद R1 की हेलो आ रही है। कैन एवरीवन सी इट? R1 की हेलो आ रही है इसको 5 सेकंड बाद। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस, मैं करता हूँ राउटर EIGRP 10 नेटवर्क। व्हाट्स माय नेटवर्क? 10.1.0.0। मैं नेट वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं पुट करूंगा। नेटवर्क इज 10. No, this is 3.0.0.0 and no auto summary. जैसे मैं करता हूँ नेटवर्क आपका रिकन्वर्ट करता है। कैन यू सी? रीसिंक्रोनाइजेशन, रीसिंक। अब यहाँ देखो कितने पैकेट्स आए। अपडेट्स, एक्नॉलेज, अपडेट, ये भी दिखाता हूँ सारा। यहाँ से कैप्चर किया था हमने, यहाँ से किया था, यहाँ से। स्टॉप कैप्चर। नाउ एनालाइज एवरी पैकेट। These are just the simple hello packets. पहले यहाँ तक तो आपका R1 सेंड कर रहा था राउटर 10.1.13.1। यहाँ पर पहला पैकेट हेलो का आपके किसने सेंड किया? 13.3 ने सेंड किया। उसके बाद इसने कुछ अपडेट सेंड करी। किसने सेंड करी? 1 ने सेंड करी। देखिए ये इसका राउटिंग टेबल है जो उसने सेंड की है। Yes, I have this 12.1 network as well. This is my 10.1.12. ये है इसके पास। इसने ये भी सेंड किया इसे। इसने 14 भी सेंड किया। इसके पास ये भी है ना, यहाँ पे 14 है। इसने ये भी सेंड किया। इसने अपना लूप बैक को भी एडवर्टाइज किया। इसके पास ये भी है और इसने राउटर 2 के लूप बैक को भी एडवर्टाइज किया। अब यहाँ पे यू मस्ट बी कंफ्यूज कि यहाँ पे /8 क्यों आ रहा है। बिकॉज मैंने नो ऑटो समरी मैंने बाद में किया था, नेटवर्क को एडवर्टाइज करने के बाद में किया था। पहले मैंने ये दिया ना, दिस इज माय टू गो टू राउटर 3। पहले मैंने नेटवर्क दिया, उसके बाद में मैंने नो ऑटो समरी किया। जब इसे नो सिंक किया तो मेरे को अपना इसने वापस चेंज करेगा। दिस इज द राउटिंग टेबल जो ये आपका R1 इसको R3 को सेंड कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आपका R3 भी आपको सेंड कर रहा होगा कुछ अपडेट।
इसमें इसने नहीं किया, फिर इसने इसको एक्नॉलेज किया, फिर अपडेट एक्नॉलेज, फिर हेलो हेलो स्टार्ट हो गया। फिर इसका कुछ क्वेरी आई किसी पर्टिकुलर उसके लिए 10.0.0 अनरीचेबल, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, कुछ हुआ होगा ये, फिर इसका वो है अनराउट। शायद ये तब का है जब हमने इसे नो सिंक किया था, तो उस टाइम पे टोपोलॉजी रिकन्वर्ज हुई थी, इसलिए उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपकी डेस्टिनेशन अनरीचेबल रह गई थी। उसके बाद इसने अपडेट सेंड करा यहाँ पे कुछ, फिर सारे अनरीचेबल हट गया वहां से। उसके बाद अपडेट गया, उसके बाद उसने एक्नॉलेज किया, जस्ट अ सिंपल एक्नॉलेजमेंट, और चलता चलता फिर वापस ये हेलो हेलो पर आ गए। आफ्टर एवरी 5 सेकेंड R3 and R1 will be sending hellos to each other. Okay, quit without saving. Now I move on to this configuration terminal, router, EIGRP, 10, node summary, network is 10.1.0.0, network is 4.0.0.0. देखिए यहां पे क्या कहता है, EIGRP is this new adjacency, new adjacency। मैंने आपको बताया था राउटिंग टेबल तभी एक्सचेंज होगा जब इसकी एडजेसेंसी आ पाएगी। कैन यू सी एडजेसेंसी आ पाई, और उसके बाद अब सारा राउटिंग टेबल होगा। जैसे शो आईपी राउट, ज्यादा ही बड़ा हो गया। Can you see the D routes? D is for your EIGRP. This is your 80, not 90. So it is 90, but this is your 80. This is your metric, composite metric. This is your directly connected route network. I say show IP route EIGRP, मेरे को सिर्फ EIGRP जनरेटेड राउट्स दिखेंगे। इसमें किसी को दिक्कत? मैंने आपको कहा था EIGRP आपका नेबर टेबल को भी मेंटेन करता है, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल। आई हैव ऑलरेडी शोड यू द राउटिंग टेबल। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका नेबर टेबल। फॉर checking the neighbor table, command is show IP EIGRP neighbor. कौन कौन नेबर है इसका? I am at router number 4 right now. पहला नेबर मेरा ये है 33.3, राउटर नंबर 3, एंड दिस इज योर राउटर नंबर 1। 1 कौन सा है? दिस इज योर राउटर नंबर 1। ये भी तो नेबर है ना मेरा, एक ये नेबर तो है, बट दिस इज ऑल्सो माई नेबर। टास्क क्या कहता है हमारा? चेक द नेबर टेबल एट ईच राउटर। लेट्स सी, R3 पे चलते हैं। शो IP EIGRP नेबर्स। इसका कौन कौन नेबर है? एक राउटर नंबर 4 नेबर है इसका, और एक इसका राउटर नंबर 1 नेबर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ R4 पे टास्क हमारा कहता है that I have to check the topology table at R4, though every router will be maintaining the topology table, but इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने आपको प्राइमरी पाथ और सेकेंडरी पाथ को रखा है। यहाँ पे तो इसके बाद एक ही पाथ है, एक ही पाथ है और एक ही पाथ है, इसलिए मैंने एक यहाँ पे इसको पर्पसली एक सेकेंडरी पाथ दिया है। तो सी द टोपोलॉजी टेबल हियर। show IP EIGRP topology, this is the command. Whoa, so big. Okay, एक बार दोबारा राउटिंग टेबल पे आते हैं, चलो उस पे बाद में आता हूँ। Can you see this? This is the
नेबर टेबल, ये इंटरफेस के बारे में, दिस इज द होल्ड डाउन सेकेंड, you have to hold for 13 seconds. अगर आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है, it will never go less than 10 seconds. इससे कम ये कभी नहीं जाएगा और आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है. दिस इज द अप टाइम, कितने टाइम पे ये अप आएगा. ओके, दिस इज अ टास्क फॉर यू पीपल. आई टेल यू, दिस इज SRTT, स्मूथ राउंड ट्रिप टाइम, एंड दिस इज द रीट्रांसमिशन टाइम आउट. ये आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज दिस SRTT एंड RTO. दिस इज द क्यू काउंट. इसमें एट CCNA लेवल फॉर यू पीपल, important thing is this queue count. This queue count should always be 0. Meaning कोई भी आपका पैकेट क्यू में नहीं होना चाहिए जाने के लिए. हर एक पैकेट आपका पहुंच जाना चाहिए दूसरे के पास. दिस इज जस्ट अ सीक्वेंस नंबर. SRTT और RTO का लाभ मुझे बताएंगे. Alright. Now I come to the topology table. Show IP, EIGRP, topology. Passive, active, update, query, reply status, stuck in active, SIA status. अगर यहाँ पे सब P है, अगर सब यहाँ पे passive है, मतलब everything is fine. Passive is okay. अगर active आ रहा है, मतलब आपके टोपोलॉजी में, कॉन्फ़िगरेशन में कहीं ना कहीं there is a problem. Stuck in active. Stuck in active कब होता है? जब आपका राउटर actively he is searching for the routes to reach a particular destination. This is stuck in active. Now to reach, for R1 to reach 1.1.1, he has to go via this path. अगर मेरा R4 को 10.1.13.0 के पास जाना है तो वो कहां से जा सकता है? वो जाएगा यहां से. इसका एक सक्सेसर है और एक FD इज योर फीजिबल सक्सेसर. फीजिबल सक्सेसर क्या वैल्यू देख रहे हैं? ये क्या है आपका? दिस इज योर सक्सेसर एंड दिस इज योर फीजिबल सक्सेसर. अगर ये पाथ डाउन जाएगा तो ये पाथ आपका इंस्टेंटली अप आ जाएगा. 14.1 को इसने अपना प्राइमरी पाथ चूज किया है, which is 14.1. This is 14.1. This is the primary path and this is the backup path for R4 to reach this particular router. Okay. अब हमें क्या करना है? मैं इस सक्सेसर को डाउन कर देता हूँ. Let's see, मैं अभी R4 पे जाता हूँ. Am I able to ping? Pinging is just a small thing. तो पिंग तो नेटवर्क में कभी हम पिंग नहीं करते, थोड़ा बहुत चलता है, but main thing is the routing table. Let's say I want to ping 1.1.1.1 with the source of 4.4.4.4. It's going right. अब मैं चलता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मोड में. इंटरफेस do show IP interface brief. Okay, I say interface F0/0. मैं इसको शट डाउन कर रहा हूं. इंटरफेस इज डाउन. नेबर दिस इज डाउन. क्या मैं उसके पास R1 के पास पहुंच पाऊंगा? Yes, sir. Backup. Why? Backup party. Ping. Still it's going. Because EIGRP ने आपका बैकअप पाथ को ऑलरेडी उसने रखा हुआ. अब मैं दोबारा शो IP EIGRP टोपोलॉजी करता हूं. Now to reach this particular, I only have one path. I hope it's clear to everyone. किसी को बोरिंग तो नहीं लग रहा? नींद आ रही तो चाय इज ऑल्सो रेडी. ओके, अब मेरी और टोपोलॉजी में क्या कहती है? द लास्ट स्टेप है हमारा. हमने क्या किया? इंटरफेस को डाउन कर दिया, सक्सेसर पाथ को डाउन कर दिया. मेरा R4 still it was able to reach. Okay, मैंने क्या था? Will R4 be able to reach host this? Yes, it was able to reach.
Now I have to apply authentication MD5. I have to apply specifically लिखा हुआ है task में I have to apply MD5 authentication to the interface, taking him to R4. At this particular interface, I have to apply authentication. Let's move on to router number 3. Go into global configuration mode. For applying the authentication, I have to make a keychain first. Keychain छल्ला बोलते हैं हिंदी में, है ना? छल्ला चाहिए, छल्ले के अंदर मुझे एक की चाहिए और उस की का मुझे एक पासवर्ड चाहिए, तभी मेरी ऑथेंटिकेशन अप्लाई होगी. ठीक है. लेट मी क्रिएट अ की चेन KC1. की चेन KC, तो मैंने इसलिए की चेन को KC कर दिया, KC1. Under this keychain, I have created a key, let's say key 1, and I have to apply one password here. Key string, let's say NITTR. For 5 minutes. Key string NITTR. Okay. पहले की क्रिएट करी है, की चेन क्रिएट किया हमने, उसके बाद इस की चेन के अंदर एक हमारी की है, उस की को यूज करने के लिए जो पासवर्ड है डेट इज NITTR. I say enter. Till now I have only created a keychain. I haven't applied it yet. मुझे क्या करना है, इंटरफेस पे जाना है. कौन सा इंटरफेस है, लेट मी चेक. F0/1. मुझे इस इंटरफेस पे जाना है. IP authentication EIGRP क्या होगा इसमें, authentication keychain KC1. इसमें कमांड रहती हैं, हम भी भूल जाते हैं. KC1 ओके. EIGRP KC1. ओके. EIGRP 10 नहीं मेंशन किया मैंने यहाँ पे. ठीक है. IP authentication keychain mode is MD5. It will ask for MD5. अगर आप नहीं मेंशन करें, that will be by default, it will be clear text MD5. मैंने कीचेन क्रिएट करी, उसने और उसको उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे अप्लाई कर दिया. Now if I go to router number 4 and I check for the show, पहले मैं क्लियर करता हूँ पुराना राउटिंग टेबल. क्लियर IP route star show IP route. राउटिंग टेबल इज गॉन. प्राइमरी पाथ सक्सेसर को मैंने खुद शट डाउन कर दिया था, दूसरे एंड पे मैंने ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर दी है. यहां पर ये दिस वाज माय प्राइमरी पाथ, इसको मैंने यहाँ पे शट डाउन किया और इधर मैंने ऑथेंटिकेशन लगा दी. अब आपको याद होगा हेलो पैकेट के अंदर जो पैरामीटर्स होता है ऑथेंटिकेशन इफ अप्लाइड, तो अब मैंने ऑथेंटिकेशन को अप्लाई किया हुआ है. तो ऑथेंटिकेशन का पैरामीटर इसमें मिसमैच हो रहा होगा इसके हेलो पैकेट में, इसलिए इन दोनों का आपस में नेबर रिलेशनशिप खत्म हो गई. योर R3 एंड R4 आर नॉट नेबर्स एनीमोर. ओके. अब मैं जाता हूं R4 पे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, अगेन कीचेन KC1.
keychain KC1 key, let's say key 2, key string, and IEEE R. This password should be same. Authentication तो दोनों तरफ से मैच होनी चाहिए ना. इसमें किसी को डाउट? No, sir. ठीक है. कीचेन क्रिएट हो गई, पर अब मुझे इसको कीचेन, इसको आपके ऑथेंटिकेशन को मैंने अभी क्रिएट किया, बस मुझे अभी से अप्लाई करना है. कौन से इंटरफेस पे? कुछ भी दे सकते हो और नाम KC1 के अलावा कुछ नहीं. नाम भी कुछ भी दे सकते हो. ये राउटर 2 का है, राउटर 4. INT F0/1. IP authentication keychain KC1 EIGRP. क्या है यहाँ पे? इससे पहले यहाँ पे EIGRP आएगा. EIGRP 10. Okay. IP authentication mode EIGRP 10 MD 5. I think we have committed a mistake. So authentication mode MD5. There are so many commands याद भी नहीं रहती. MD5. Mode MD5. सीखते भी है, बट ये अब क्यों नहीं आया? Okay. Just a second. Company terminal. KC1. No. K2. K1. Yeah, key should be same. जैसे ही मैंने की स्ट्रिंग key1 में एंटर किया, नेबर रिलेशनशिप मेरी वापस अप आ गई. If I see routing table now show IP route, now I Sort of, you just give them a break for tea, right? now I have all the routing table here. Now if I want to ping 2.2.2.2, it will go. मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ. अब ऑथेंटिकेशन मेरी सेम आ गई, जैसी वो सेम आई आगे चल गई. So I hope you enjoyed the class. Your tea is ready, and we'll meet after. What time? We'll meet at 12. I don't think we'll be able to cover EIGRP topology. Remote center, this is a tea time, and we'll reassemble at 12. In the meantime, we are sending you the PPTs. Kindly download the same one.